on this. I think ये एक सिर्फ एंड्रे बेटायल वाला एक थ्योरी जो है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट रह जाएगी. अब आपका बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. So keep making notes along with me because I would be giving you powerful lecture for 45 minutes. If in case you people do not understand, do let me know that what it is. Okay, तो आपको बहुत ज़्यादा note making में emphasize करना है. So please write down André Beteille, everyone. Now, why can't we understand that all these thinkers, all these sociologists, whosoever who is writing, okay, M.N. Srinivas and G.S. Gure, what do you think what they have reflected on? With respect to caste. If M.N. Srinivas explained how caste changes, यही उन्होंने explain करा है within tradition. So can I say, if I have to explain, just a moment. If I have to explain the writing of André Beteille, please write down the name. André Beteille, write down. If M.N. Srinivas explain how caste changes within tradition. So M.N. Srinivas explained caste changes within tradition. To explain even social mobility, he uses hierarchical traditional model. Okay, so it was André Beteille. It was André Beteille who have demonstrated that how even in modern phase or in modernity, caste survives. This is the entry point for all of us when we are understanding André Beteille. I am telling you that this is the most important way to remember all the thinkers when you are making interconnections. Okay, so what you can remember now, Shivansh, for André Beteille? अभी बताया है. Tell me. M.N. Srinivas ने क्या समझाया था? So why he is important? Tell me why he is important. Significance. Just think. Write down. First of all, he moved Indian sociology beyond. Indian sociology के ऊपर इन्होंने काफी काम किया and he moved Indian sociology beyond पहला purely textual understanding of caste. Textual understanding of caste से भी ये बाहर लेके गए. Indological approach जो caste use करता था उससे भी he took it okay to further level.
and purely ritual hierarchy model. इन्होंने जो ल्यू डिमॉन्ड ने जैसे बताया कि कास्ट एक हायरार्किकल मॉडल है, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट प्योरली हायरार्किकल. Instead, write down, he examined caste through. Instead, he examined caste through. He examined caste through empirical fieldwork, inequality, class relations, power structures, and modern institutions. Now, as I have explained earlier, that whensoever we need to understand any thinkers, we should have their intellectual backgrounds clear in our head. So what is the intellectual backgrounds of André Béteille? Write down heading, intellectual background. He was highly influenced by British social anthropology. Highly influenced British social anthropology, Weberian sociology, structural functionalism, Weberian sociology, structural functionalism, and comparative sociology. Unlike Louis Dumont, okay? So we have seen how Louis Dumont has explained caste as ideological system. Okay, so unlike Louis Dumont, he did not treat caste. Unlike Louis Dumont, he did not treat caste as an ideological system of purity and pollution. क्योंकि ये एक नया पर्सपेक्टिव है. ओके, ही इज सेइंग कि कास्ट जो है चेंजेस हो रहा है मॉडर्निटी पे, मॉडर्न टाइम में भी कास्ट रहेगा. ल्यू डुमॉन्ट ने कहा कि भाई आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, ही इज नॉट ट्रीटिंग इन दैट मैनर. ही इज सेइंग कि प्योरिटी और पॉल्यूशन से भी कुछ और है. सो ही व्हाट इज हिज सेंट्रल आर्ग्यूमेंट? राइट डाउन. सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ एंड्रे बेटाइल, आप कास्ट को सोशल रियलिटी से कनेक्ट करो. तो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ एंड्रे बेटाइल, caste must be studied. Caste must be studied as a lived reality. Lived social reality connected with land, power, economy, politics. Okay, so he is saying that caste को आपको understand करना है land, power, ओके, लैंड, पावर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स. ठीक है, अब मुझे ये बताइए दैट
what is happening, what he is explaining here? He is saying कि ये जो का is he is saying major argument तो उनका ये है ना कि it's a lived social reality. André Béteille is arguing on this. ठीक है, तो क्या आप इसको किसी सोशियोलॉजिस्ट से कंपेयर कर सकते हो, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट? कनिष्क, हाँ, अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आप पहले मुझे बताओ, टैकर पर्सन ने अलग वे में ये पॉइंट बोला, अभी ये बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कास्ट को आप लैंड से भी एनालाइज करोगे, पावर से भी एनालाइज करोगे, इकोनॉमी से भी करोगे, पॉलिटिक्स से भी करोगे, तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? नहीं, इसका टर्म क्या है यहाँ पे? एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है, कितने कॉन्सेप्ट है? एक कैसे है? लैंड एक कॉन्सेप्ट है, पावर एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिक्स एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? क्लास को कैसे देखना है? सिर्फ इकोनॉमी, हैव एंड हैव नॉट। ओके, यहाँ पे आप लैंड भी देख रहे हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी देख रहे हो, यहाँ पे आप पावर भी देख रहे हो, सोशल कल्चरल पावर, किसी भी तरीके से पावर, यहाँ पे इकोनॉमी भी देख रहे हो, पॉलिटिक्स भी देख रहे हो। तो क्या कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे? कितने कितने डायमेंशन है? सिर्फ 4 डायमेंशन बोलोगे कि दे आर 4 डायमेंशन, या क्योंकि अगर मैं पावर को ही एक्सप्लोर कर दूं तो और भी डायमेंशन आ जाएंगे। वेरी गुड, मल्टी डायमेंशनल। कौन सा ऐसा क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट है जिसने कहा है कि सोशियोलॉजी इज इज अ डिसिप्लिन दैट हेल्प अस टू हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर किसने फोकस किया है? एग्जैक्टली, राइट। सो यहाँ पे वेबेरियन पर्सपेक्टिव, दैट अगर आपको कास्ट को समझना है, वी नीड टू यूज मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव्स। प्लीज राइट डाउन। मैं आपसे कह रही हूँ शिवांश, थोड़ा डिसिप्लिन बन जाओ, आप ना टॉप कर जाओगे ये एग्जाम। राइटिंग अच्छी है, कंटेंट, दिमाग में क्लैरिटी है, बट तुम्हारे अंदर जो भूत सवार है ना इनडिसिप्लिन होने का, नहीं, इसके पास बहुत पैसा है बेसिकली। घर वाले इसकी इतने में खुश हो गए कि हमारा बेटा जो है आईआईटी में पढ़ चुका है, बस। समझ लो बेटा क्या करोगे, जमीन इतनी है, जॉब, मैं खुश करूं, मैं खुश करूं। मैं इसने बोला पापा पापा आईआईटी में पढ़ लिया, अब क्या चाहिए? दिल्ली जाके मुझे घूमना फिरना है, अब मुझे रख लेना जॉब में, ठीक है? तो ही इज दैट फ्री, राइट? घर वालों का नाम रोशन कर चुका है। घर वालों ने पूछा होगा बेटा अब क्या चाहिए? मुझे फ्रीडम चाहिए। ऐसे क्या करूंगा? तो नाम भी तो देना है गाँव में, घर में लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, चलो तुम इंस्टीट्यूट ही डालो। तो एनीवे, so thus caste is, please write down, thus caste is not only ritual hierarchy but also material inequality. But also material inequality. So actually में what he has said, it's true. Interrelation किया है. Okay? So please write down the most important contribution of André Béteille is interrelation of caste, class and power. Interrelation of caste, class and power.
फील्ड वर्क किया उन्होंने सिरीपुरम, राइट डाउन, फील्ड वर्क सिरीपुरम. ये वर्क डेफिनेटली रेवोल्यूशनाइज इंडियन सोशियोलॉजी. फील्ड वर्क, ओके. सिरीपुरम. Now core argument. Please write down that earlier scholars have said caste hierarchy, economic hierarchy, and political hierarchy. Okay? So it's overlapped perfectly. जितनी भी hierarchy है, political, economic, political hierarchy, write down. Caste hierarchy, economic hierarchy, caste hierarchy, economic hierarchy, political hierarchy, overlap perfectly. सारे overlapping है. मतलब आप एक अपर कास्ट हैं, आप रिच भी हैं, आप पॉलिटिकली पावरफुल भी हैं. समझ में आया? अपर कास्ट, रिच, पॉलिटिकली पावरफुल. बट Béteille discovered that modernization disturbed this alignment. But Béteille discovered that modernization disturbed this alignment. Okay? अब लिखो his major observation. In traditional villages, the highest ritual status is to Brahmins. Okay? Then the economically powerful group is landowners. Politically power group is dominant peasant castes. So for André Béteille, these no longer completely overlapped. Thus, caste hierarchy became fragmented. Class mobility emerged. Class mobility emerged. Political democratization altered. Political democratization altered traditional authority. Political democratization altered traditional authority. ठीक है? This was a major break. This was a major break from static views of caste. What you will write down for Dumont, caste is fundamentally a value system. And André Béteille argues that earlier explanation on the caste have ignored economic exploitation,
land ownership, political domination, inequality, social mobility. Thus, he shifted from ritual hierarchy to social stratification. To social stratification. ठीक है? So write down for caste. It is as empirical reality. We do have material inequality, dynamic transformation, power and class. Okay? Now, according to Béteille, modernity does not destroy, according to Béteille, modernity does not destroy caste automatically. अगर कास्ट एंड पॉलिटिक्स आ जाए, कास्ट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी आ जाए, तो आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे. ओके? इंस्टेड कास्ट अडैप्ट इटसेल्फ. कास्ट एसोसिएशंस, ये एग्जांपल है. यू विल सी देयर आर कास्ट एसोसिएशंस, कास्ट बेस्ड वोटिंग, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स, urban caste networks, marriage alliances, caste associations, caste-based voting, reservation politics, urban caste networks, marriage alliances. Okay? तो लिखो आप, लिखो. इसीलिए caste moves, henceforth caste moves from ritual sphere to political and competitive sphere. अब कास्ट आपको दिखता है ना कंपटीशन में, पॉलिटिक्स में. तो कास्ट मूव्स फ्रॉम रिचुअल स्फेयर टू पॉलिटिकल एंड कॉम्पिटिटिव स्फेयर. ये डीपेस्ट ऑब्जर्वेशन है एंड्रे बेटाइल की. एक और मेजर आर्ग्यूमेंट था एंड्रे बेटाइल का, दैट ही इज आर्ग्यूइंग कि जिस तरीके से कार्ल मार्क्स इंडियन सोसाइटी को समझ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, प्लीज राइट डाउन. इन अकॉर्डिंग टू बेटाइल, Indian society cannot be explained only through economic class. Only through economic class, because caste status affects opportunities. ठीक है? कास्ट स्टेटस जो है वो अपॉर्चुनिटीज इफेक्ट करेगी. सोशल ऑनर मैटर्स. रिचुअल रैंकिंग shapes life chances. Thus, Indian inequality is multi-dimensional. So write down, André Béteille transformed caste studies from a purely ritual model into a multidimensional sociology of inequality,
André Béteille transformed caste studies from a purely ritual model into a multi-dimensional sociology of inequality, demonstrating that caste survives by interacting with class, power, and democracy rather than existing outside them. Class, power, and democracy rather than existing outside them. Okay? Write down one question. Does modernization for your practice, does modernization weaken caste? कल वाला आंसर निकाल लीजिए कॉपी अपनी, मैं चेक करूंगी. वीकेंड कास्ट इसी में लिखा हुआ है क्या? कल वाला आंसर किस किस ने लिखा था? ओके, वो मुझे भी शो करो. वीकेंड कास्ट और merely change its form. ओके, आपको यूज करना है एंड्रे बेटाइल फ्रेमवर्क. क्लास 11:30 तक है. ओके, सो राइट डाउन. एक आपको बता सकती हूँ मैं, थोड़ा स्टार्टिंग आप कर सकते हो. हाँ, ये भी बस मैं अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ, तो आप 250, 200, 150 जो भी आप कंफर्टेबल हो. यस, कल का आंसर दिखाइए किस किसने लिखा था.